It's like there are certain words in NLP. If you join my courses, this is one of the first things that you will find, you will learn. I teach people to use some words very, very carefully. And the first of those words is the word try. Okay. And remember, I'm not saying not to use this, I'm saying use it carefully. And I'll tell you why. मैंने अभी आपसे कहा था NLP is about effects of communication. कि मेरी कम्युनिकेशन का, मेरे अल्फाज का, कम्युनिकेशन में बाय द वे इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स. ओके, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एंड देन देखो इसमें कितनी सारी चीजें. एक वो कम्युनिकेशन जो हमारे अपने साथ होती है, एक वो कम्युनिकेशन जो हम किसी दूसरे के साथ करते हैं. सो एक इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, ये दो चीजें हो गई. अब इन दोनों के अंदर हम जब बात कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लहजे के साथ हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टोनैलिटी के साथ, द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग इन द टोन विद विच वी आर यूजिंग दोज वर्ड्स, and the body language or the physiology with which we are using those words. So all of those things, create that thing that we call impact. Okay. So this word try, when we say try, or कीजिए, I'll just use this and notice what happens. If I say, if a friend of, one of your friends says, यार कल मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की, I tried to call you so much, I tried to contact you. अब गौर कीजिए, इस वर्ड में the built-in feature is, or the presupposed thing is, that I failed to contact you. So the word try has failure built into it. Okay. So when we say, I will try to do this, we are actually setting ourselves up for failure. Okay. So इसलिए I tell people, rather than using the word try, say, I'll do it. Okay. And this will be helpful for you.